Hello everyone, our today's topic is tonsil, particularly the palatine tonsils. So हम सबको पता है what is tonsil. So tonsils are the aggregated lymphoid tissue. Particularly we are talking about palatine tonsil, the main tonsil of our body. So the palatine tonsil is what? It is a almond shaped. So palatine tonsil is which almond shaped structure. You can see over here. So this is our palatine tonsil. Now palatine tonsil, so it is occupies the tonsillar fossa. ये कहाँ पर होता है? इट लाइज इन द टॉन्सिलर फोसा, ऑल्सो नोन एज टॉन्सिलर साइनस. और ये किसके बीच में होता है? द टॉन्सिलर फोसा इज बिटवीन व्हाट? पैलेटोग्लोसल आर्च एंड द पैलेटोफेरेंजियल आर्च. It lies between two structures, palatoglossal and palatopharyngeal arch. In what? In oropharynx. So you can see over here. So this is our tonsil, lies in tonsillar fossa. This is palatoglossal arch and this is palatopharyngeal arch. Now about tonsils. So tonsils, इसके एक्सटर्नल फीचर्स पूछे जा सकते हैं. तो tonsils have two surfaces, which is medial surface and the lateral surface, two borders, anterior and posterior border, and two poles, upper pole and the lower pole. So starting up with the poles first. So you can see over here, this is the upper pole, this is the lower pole. Upper pole is has relation with the palate and also with the palatoglossal arch. The lower pole over here, you can see lower pole has relation with the tongue and the palatopharyngeal arch. Now we have discussed that there are two main surfaces. So this is known as the medial surface, this is known as the lateral surface. Now talking about medial surface, so you can see that there are many crisps. So there are mainly 10 to 12 crisps in the medial surface, and one crisp is prominent in the medial surface known as intratonsillar crisp. We are talk about later. Now we can see over here there is the lateral surface of the tonsil. Now in the lateral surface, you can see in the inferior part of the lateral surface there is attachment of a ligament known as suspensory ligament of tonsils. So ये जो लिगामेंट है ये टॉन्सिल को टंग के साथ अटैच रखता है और म्यूकोजा के साथ अटैच रखता है ताकि टॉन्सिल जो है वो अपनी प्लेस में से डिसलोकेट ना हो सके. तो दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल अटैच विद द inferior part of the lateral surface of the tonsil. Now there are main two borders. This is known as the anterior border of the tonsil, this is known as the posterior border of the tonsil. Now talking about anterior border, so anterior border of the tonsil is also known as anterior pillar of the tonsil. Posterior border of the tonsil is also known as posterior pillar of the tonsil. Now we are going to start with the theoretical part. So as you can see, the medial surface is covered with what? Yes, the medial surface is covered with non-stratified keratinized not keratinized stratified squamous epithelium. So it basically what? It protects the tonsil. और यहाँ पर मैंने बोला आपको that there are intertonsillar clefts. Now the lateral surface covered with what? The sheath of fascia. Over here you can see the lateral surface has covering of sheath of fascia known as tonsillar capsule. Now जो ये tonsillar capsule है वो upper part में इतना aggregate नहीं होता है, but the lower part of the tonsillar capsule is very much aggregated. और यहाँ पर lower part में आपको फिर यहाँ पर suspensory ligament of tonsil देखने को मिलता है. तो इस पैराग्राफ में पूरा यही दिखाया गया है कि suspensory ligament of the tonsil related with the tongue वगैरह दिखाया गया है. Now we are going with the all surfaces first. The anterior border is related with what? The palatoglossal arch and with the muscle. So यहाँ पर anterior border जो है वो palatoglossal arch के साथ अटैच है, वहाँ पर palatoglossal muscle भी होता है तो उसके साथ भी वो रिलेशन रखता है. The posterior border is related with the palatopharyngeal arch with the muscle, ये भी हमने बोला है. Now the upper pole is related with soft palate and the lower pole is with the tongue. So we have also discussed that upper pole is attached with the soft palate, lower pole is relation with the tongue through suspensory ligament. So now there are main two. This is the one marker. This is the plica triangularis and the plica semilunaris. Now what is the plica triangularis? So plica triangularis is the mucosal membrane covering with vestigial fold of antero-inferior part of the tonsil. So you can see over here, this antero-inferior part of the tonsil has a triangular manner or triangular structure, which is known as plica triangularis. And what is plica semilunaris? So plica semilunaris is similar with it has the semilunar structure, semilunar fold, and वो upper part of tonsil sinus मतलब के upper part में देखने को मिलता है. So it is seen in the upper part, anterior upper part, और यहाँ पर ये anterior inferior part में देखने को मिलता है plica triangularis.
Now talking about the relations of the tonsils, and this is the most IMP topic, the bed of the tonsil. So bed of the tonsil, we are going with within outwards, means we are going to medial to lateral. So it is what? Pharyngeo Pharyngeo-basilar fascia, the superior constrictor and the palatopharyngeus muscle, the buccopharyngeal fascia, the lower part it is attached with the styloglossus muscle and the glossopharyngeal nerve, which is the ninth cranial nerve. So in the diagram you can see all the relations. So starting up with the medial से lateral border पे तरफ जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर you can see over this fascia, this green colored fascia named what? Pharyngeo-basilar fascia. तो ये tonsillar bed बहुत ही IMP है, you have to remember this green color structure. This is pharyngeo-basilar fascia. After then, this red color structure, which is what? Which is the superior constrictor muscle. This red is the superior constrictor muscle. After that, there is the buccopharyngeal fascia. Over here, the green colored fascia. Then there is the venous plexus, which is not a particular relation of it, but there is a glossopharyngeal nerve. It forms the tonsillar bed. After glossopharyngeal nerve, in the lower part there is a styloglossus. Upper part is glossopharyngeal nerve, lower part is the styloglossus muscle. So this is about the bed of the tonsil or tonsillar bed, which is very IMP. You have to remember this all 5 or 6 structures which forms the bed of the tonsil. Now other important topic, which is known as the arterial supply of the tonsil. So over here you can see there are main 5 type of sources of arterial supply, but among them the major source is from the tonsillar branch of facial artery. So let me see you over here. से टॉन्सिल्स को जो है 5 जगह से मेन ब्लड सप्लाई मिलता है. मेन फ्रॉम व्हाट? मेन फ्रॉम द टॉन्सिलर ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी. देन फेशियल आर्टरी से दूसरा मिलता है विच इज़ द असेंडिंग पेलेटाइल आर्टरी, विच इज़ व्हाट? facial artery से ascending palatine artery from the facial artery, then ascending pharyngeal branches from what? From the external carotid artery. From the lingual artery there is a dorsal lingual artery, and from the maxillary artery there is a greater palatine artery. So revising that, this is the external carotid artery, from that there is a facial artery. So main supply is the tonsillar branches from the facial artery. Other than that, the ascending palatine branches from the facial artery, then we are going for the maxillary artery. So maxillary artery gives what? Greater palatine branches. Now we are going to external carotid artery. So directly external carotid artery gives ascending pharyngeal branches. After that, this is the lingual now. Lingular artery, and lingular artery gives dorsal lingual branches to the tonsils. So this is about the arterial supply of the tonsils. Now what is about the venous drainage? So venous drainage, as we all know that in the lower part, deep part, tonsillar जो है वो superior constrictor muscle से pierce होती है what? The veins, and फिर वो फेशियल वेन में या फिर फेरेंजियल वेन में या फिर पेलेटाइन वेन में, जो तीनों की तीनों वेन जो आपके ओरल कैविटी में प्रेजेंट है वहाँ पर वो चली जाती है. नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में यहाँ पर लिखा नहीं है, बट इट विल first go to the deep cervical lymph nodes, and after that the deep cervical lymph nodes, it is going toward the jugulodigastric nodes. Now the jugulodigastric nodes is also known as tonsillar lymph nodes or tonsillar nodes, और वहाँ से फिर वो tonsils को lymphatic drainage होता है. Now the nerve supply meant to glossopharyngeal nerve, which is the 9th cranial nerve, and the lesser palatine nerve. It is very important. Now we are going for the clinical or applied anatomy. So first applied anatomy is in the tonsils are larger in the children, then after puberty, जैसे puberty आती जाती है tonsil की size कम होती जाती है. Then the tonsils are frequently site of infection. जो tonsil है उसमें infections हो सकते हैं. तो चिल्ड्रन के अंदर बहुत ही easily infections, और फिर we can say that पेरी टॉन्सिलर एब्सेस वहाँ पर देखने को मिलता है. अब टॉन्सिल्स की इंलार्जमेंट हो जाती है कई बार, तो हमें टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ती है. टॉन्सिलेक्टमी इज़ वेरी IMP. नाउ व्हाट इज़ अबाउट द टॉन्सिलेक्टमी? सो आपको यहाँ पर याद रखना है कि टॉन्सिलेक्टमी मतलब कि टॉन्सिलर को रिमूव करने के बाद वहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है उनका क्लोट हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग, बट उस ब्लड क्लोटिंग को हमें बॉडी में से हटाना पड़ता है. दिस इज़ वेरी IMP. और किसी पार्ट के रिमूवल के बाद हमें उसके क्लोट को नहीं हटाना पड़ता है, बट टॉन्सिल ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको रिमूव करने के बाद उसके क्लोट जो फॉर्मेशन होता है उसको हटाना पड़ता है.
वरना हेमोरेज हो सकता है। तो क्लोट जो है, क्लोट फॉर्मेशन होता है, उसको हटाना पड़ता है। और हमें साथ साथ में ये भी याद रखना है कि टॉन्सिल्स के साथ जो यूट्रस है, रिमूवल ऑफ यूट्रस, तब भी जो ब्लीडिंग के थ्रू क्लोट्स होते हैं उनको भी हमें हटाना पड़ता है। नाउ द टॉन्सिलाइटिस, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स। तो वो रिफर्ड पेन करता है कहाँ पर, ईयर पर। क्यों? क्योंकि टॉन्सिल की जो सप्लाई है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और साथ साथ में हमको पता है दैट टॉन्सिल एंड ईयर दोनों की सप्लाई ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से होती है। सो रिफर्ड पेन वहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ इट इज़ अबाउट द क्वांसी। सो व्हाट इज़ क्वांसी? सो सप्रेशन, जब भी पेरिटॉन्सिलर एरिया जो होता है वहाँ पर सप्रेशन होता है, उसको बोला जाता है क्वांसी। तो वहाँ पर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसके वजह से वहाँ पर हमें टॉन्सिलोक्टोमी करनी पड़ती है। नाउ टॉन्सिल जो है वो ओफन साइट ऑफ व्हाट, सेप्टिक फोकस सच एज फोकस। तो टॉन्सिल्स के थ्रू कई सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं, लाइक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, ये जो है ओफन कॉजेज ऑफ जनरल इल हेल्थ, टॉन्सिल्स के थ्रू ये हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉन्सिल्स। वी हैव यू हैव टू focus about what, about its shape, its location, then its borders, surface in poles, then very IMP this diagram, this is its arterial supply and its clinical. These are very important topics of tonsils. Thank you.